अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ठीक होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम जॉर्ज इलियट के नावल मिल ऑन द फ्लॉस का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। मोरल डिलेमा इन द नावल मिल ऑन द फ्लॉस। तो ये बहुत ही इजी वर्डिंग्स में है और इसके बाद मैंने कोटेशंस भी पुट की हुई हैं ताकि तमाम स्टूडेंट्स अच्छे से अच्छे मार्क्स गेन कर सकें। तो किसी भी तरह का स्टूडेंट्स अगर क्वेश्चन आ जाए तो आपने सबसे पहले उस नावल का ब्रीफ इंट्रोडक्शन लाजमी देना है ताकि एग्ज़ामिनर पे अच्छा इम्पेक्ट पड़े। उसके बाद आपने जो क्वेश्चन हो उसको फर्दर एक्सप्लेन करना है। तो अब हम टाइम वेस्ट किए बगैर डिस्कस करते हैं मॉरल डिलेमा इन द नावल मिल ऑन द फ्लॉस बाय जॉर्ज एलियट। स्टूडेंट्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस तरह की वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सकें। तो यहाँ पर एक टर्म यूज़ की गई है मॉरल डिलेमा। एक्चुअली ये डिलेमा होता है कि ये डिलेमा का जो मतलब है मुश्किल सूरत हाल में, यानी कि इसे हम कह सकते हैं ये एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें आपके पास दो ऑप्शन हैं और आपने उनमें से एक को चूज़ करना है और बहुत उस एक को चूज़ करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। यानी कि यू कैन से दैट इट इज़ इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट। Moral dilemma is a conflict between two options. You have to choose one. First of all, we see the introduction of the novel Mill on the Floss by George Eliot. हम जॉर्ज इलियट का इंट्रोडक्शन देखते हैं। The Mill on the Floss is a novel by George Eliot, the pen name of Mary Ann Evans. अब जॉर्ज इलियट का जो पेन नेम्स था ना वो था मैरी एन एवंस और ये नावल पब्लिश्ड हुआ था 1860 में। इट टेल्स द स्टोरी ऑफ सिबलिंग्स टॉम एंड मैगी टोलिवर हु ग्रो अप इन अ मिल ऑन द रिवर फ्लॉस इन रूरल इंग्लैंड as they navigate the challenge of family expectations, societal norms and personal desires. अच्छा स्टूडेंट्स, ये जो है ना फैमिली एक्सपेक्टेशंस, सोसाइटल नॉर्म्स, पर्सनल डिज़ायर्स, लव, ड्यूटी, ये आप इसके थीम में भी लिख सकते हैं। दे मस्ट ग्रैपल विद थीम्स ऑफ लव, ड्यूटी एंड betrayal. The novel explored the complexities of human relationship and the struggle for individual freedom in a society bound by tradition. स्टूडेंट्स, किसी भी तरह का अगर क्वेश्चन आ जाता है मिल ऑन द फ्लॉस के रिलेटेड, तब आपने ये ब्रीफ इंट्रोडक्शन लाजमी लिखना है और इसमें जो 3-4 कोटेशंस मैंने पुट की हुई हैं तो आपने हर तरह के क्वेश्चन में वो पुट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, हम आगे देखते हैं। वन मोरल डिलेमा इन जॉर्ज एलियट्स नावल द मिल ऑन द फ्लॉस इज़ द कॉन्फ्लिक्ट फेस्ड बाय द प्रोटैगनिस्ट मैगी टोलिवर। प्रोटैगनिस्ट कहते हैं कि ड्रामे का मोस्ट इम्पॉर्टेंट यानी कि मेन कैरेक्टर ऑफ ड्रामा नावल। Maggie Tulliver between duty and desire. Throughout the novel, Maggie struggles with her sense of responsibility towards her family and societal expectations, while also yearning for personal fulfillments and happiness. So we can see that moral dilemma in the novel Mill on the Floss by George Eliot due to following key points, following elements, and you can say that following themes. Maggie's love for Tom versus her duty to Philip. Maggie struggles with her feelings for her brothers Tom and her lover Philip. She loves both of them deeply, but she also feels obligated to honor her commitment to Philip. This conflict
puts her in a difficult position where she must choose between following her heart and fulfilling her duty। जिस तरह हम मॉरल डिलेमा का मतलब देख चुके हैं, मुश्किल सूरत हाल में यानी कि दो ऑप्शन होते हैं, उनमें से एक को चूज़ करना है। अब यहाँ पर मैगी के पास भी दो ऑप्शन हैं, एक है लव फॉर टॉम यानी कि ब्रदर और दूसरा ड्यूटी टू फिलिप। यहाँ पर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कोटेशंस यूज़ की गई जो जॉर्ज इलियट के नावल मिल ऑन द फ्लॉस लाइन्स नंबर 215 है, जहाँ पर मैगी कहती है टॉम से, आई मस्ट फॉरगेट बोथ हिम टॉम एंड यू फिलिप इफ़ आई एम टू फुलफिल माई ड्यूटी। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट कोटेशंस है। मैगी, अब हम नेक्स्ट देखते हैं, Maggie's loyalty to her family versus her desire to independence. Maggie is torn between her loyalty to her family, particularly her brother Tom, and her desire to assert her independence and make her own choices. She wants to break free from constraints of her family's expectations, but she also feels guilty for betraying them in the process. अब George Eliot writes, it was no use no to try and give away to their idealness and rest. She must walk weary, till she reached some country where she could be sure of finding a humble hut of shelter. Next, Maggie's duty to Stephen versus her own happiness. Maggie is faced with the moral dilemma of whether to honor her engagement to Stephen, despite her growing feelings for Tom. She must decide whether to prioritize her duty to Stephen or to follow her heart and pursue her own happiness. T.S. Eliot writes in the novel Mill on the Floss, line number 434, oh, I have pushed by Mr. Stephen Guest because he was the one that tempted me, and Tit's nickname of Tom, is angry with me because I went to meet him because I felt as if I should like to be tempted. So, we may conclude that these moral dilemmas in the novel Mill on the Floss by George Eliot highlight the complexity of human relationship and the difficulty of making choices that balance personal happiness with duty and loyalty to others. Maggie's inner conflict serve as a pageant, poignant reminder of the challenge we face when our values and desires are at odds. I hope students आप समझ गए होंगे। इसके बाद स्टूडेंट्स जो क्वेश्चन आपको समझ नहीं आ रहा तो आप उस क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में लिखिए, इंशाल्लाह उसके ऊपर बहुत जल्द से जल्द वीडियो अपलोड की जाएगी। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।